Hi friends, welcome back. Today we will start with class 7 science. So today we will start our first chapter nutrition in plants. We will do this in 2 or 3 parts because अगर हम एक ही वीडियो में करेंगे तो चैप्टर थोड़ा लेंथी हो जाएगा. So let's start with today's class, part 1. First of all, what is nutrition? हमने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको फूड चाहिए. फूड में भी उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत है. जैसे हम पूरे दिन कुछ भी कचर पचर खाते रहेंगे तो उस समय न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. हमें मेनली हमारे फूड में चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, राइट. सो ये सब चीजें जो होती है इन सब चीजों को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. एंड द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन. All living organisms require food for living, which we get from both plants and animals. हमें plants और animals दोनों से food मिलता है और दोनों से ही हमें उस food में vitamins, carbohydrates, proteins, fats ये सब मिलते हैं. So the food we eat contain carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Mainly these, right? These components of food are known as nutrients. इन्हें कहते हैं हम nutrients. And the mode of taking food or the mode of taking nutrients and its utilization by the body is called nutrition. I hope you are clear with nutrition. And as we read above, we get nutrition from both plants and animals. So in this chapter we will study about nutrition in plants, and in the chapter 2 we will study about nutrition in animals. So let's start with today's session, which is nutrition in plants. अभी हमने क्या किया, nutrition क्या होता है? So the intake of food which contains carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals, which we call as nutrients, and its utilization by the body is called nutrition. Now the mode of nutrition in plants. There are two ways in which the plants can take their food. One is autotrophic and another is heterotrophic. We will study both these modes of nutrition in detail. So plants are the only organisms that can prepare their own food with the help of raw materials present in environment. सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं with the help of raw materials from the environment. Raw materials कौन कौन से environment में? sunlight, वाटर, मिनरल्स. ये चीजें जो है इन चीजों से सिर्फ प्लांट्स ही अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में जो सनलाइट, वाटर, मिनरल्स से अपना फूड प्रिपेयर कर सके. हम भी अपना फूड खुद बनाते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे रॉ मटेरियल जो है वो प्लांट से लेते हैं. तो हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉपिक है. लेकिन प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, मिनरल्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. And the mode of nutrition in which we or other organisms acquire food from other plants is called heterotrophic nutrition. ये हम डिटेल में करेंगे अब. Now first we will study about autotrophic nutrition in plants. The mode of nutrition in which organisms prepare their own food. See, autotrophic. Wait a minute. हमारे पास क्या था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या था? 2 टाइप्स के थे, राइट? ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटरोट्रॉपिक. फाइन. ऑटोट्रॉपिक कौन सा होता है? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. एंड हेटरोट्रॉपिक कौन सा होता है? विच एक्वायर्स देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म. क्लियर?
So autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms prepare their own food from simple substances, raw materials present in environment. Sunlight, water and minerals from the soil is called autotrophic nutrition. Auto means self and trophic means nourishment, self nourishment. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम ये भी कह सकते हैं सेल्फ न्यूट्रिशन और सेल्फ नरिशमेंट. Therefore, plants are called autotrophs because they prepare their own food through photosynthesis. Now, what is photosynthesis? It is a process of preparing food with the help of raw materials present in environment like sunlight, waters and minerals. Second is heterotrophic nutrition. The mode of nutrition in which the food is obtained from plants through different methods and not prepared by their own is called heterotrophic nutrition. Animals obtain their food from plants and hence are known as heterotrophs. I hope it's clear for you. Heterotrophic nutrition means we obtain our food or we depend on other organisms for our nutrition. Clear? One question is asked in our book. Why we cannot make food from CO2, H2 and minerals like plants? CO2 here refers to carbon dioxide. I hope you know it. Carbon dioxide. And H2O refers to water. So why we cannot make our food from carbon dioxide, water and minerals just like as plants? Because we lack chlorophyll. जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है called chlorophyll, which helps them to absorb the energy of sunlight. This we will study in the process of photosynthesis. हम अपना फूड खुद सनलाइट से, वाटर से, मिनरल से इसलिए नहीं प्रिपेयर कर सकते क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है. क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट होता है which helps plants to absorb the energy of sunlight and prepare the food from water, minerals, etc. Clear? So मेन रीजन जो है प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस करने का या फिर प्लांट्स के ऑटोट्रॉपिक होने का वो है क्लोरोफिल. I hope you are clear with this. Chlorophyll कहते हैं green pigment which helps plants to absorb the energy of sunlight, and in the presence of chlorophyll the process of photosynthesis takes place. So I hope you get your answer because we lack chlorophyll. And what is chlorophyll? Green pigment present in leaves to absorb the energy of sun and do photosynthesis. It is also responsible for the green color of leaves. Clear? So let's move forward. Now the process of photosynthesis, the food making process in plants, जिसकी वजह से plants autotrophic nutrition कर पाते हैं. The process of making food with the help of sunlight, water, minerals. Sorry, it's not actually minerals, it's minerals. And nutrition present in soil and atmosphere in the presence of chlorophyll. See, chlorophyll के presence में जो process किया जाता है of making food with the help of sunlight, water, minerals and nutrition is known as photosynthesis. This is important. This can be asked. What is photosynthesis? Leaves are the food factories of plants. Hence, all the raw material must reach the leaf. अब जो हमारा photosynthesis process होता है वो होता कहाँ है? ऑब्वियसली क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में. तो जितना भी फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा? लीव्स में. इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है.
जितना भी रॉ मटेरियल होता है, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें आफ्टर ऑल कहाँ पहुंचती है फॉर द प्रोसेसिंग? टू द लीव्स. Water and minerals present in the soil are absorbed by roots and transported to the leaves. अब वाटर एंड मिनरल्स है वो नीचे से रूट से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन फाइनली पहुंच कहाँ रहे हैं? लीव्स में. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of leaves called stomata. Stomata is also important. Tiny pores present on the surface of leaves to absorb, or we can say for the process of exchange of gases. Water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipes in the whole plant body. अब जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो प्लांट तक पहुंचते कैसे हैं? थ्रू वेसल्स. ये क्या होती है? कुछ फ्लोएम और जाइलम, ये इनके नाम होते हैं, ये वेसल्स होती हैं. ये क्या करती है? दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पैसेज. ये पाइप्स की तरह काम करती है. इनके बारे में डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना है कि वेसल्स होते हैं जो कंटिन्यूअस पैसेज बनाती है फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. फाइन. तो ये याद रखना है कि हमारे जो वाटर एंड मिनरल्स है वो लीफ तक कैसे पहुंचते हैं? थ्रू द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स इन द होल प्लांट बॉडी एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पैसेज फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. क्लोरोफिल हमने किया. ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स विच हेल्प्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट which is used to synthesize we can say to prepare or to make. Prepare, or we can say to make. Fine. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. अब ये प्रोसेस सनलाइट के, क्लोरोफिल तो है, लेकिन क्लोरोफिल के अलावा जो सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? सनलाइट. क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट एब्जॉर्ब करता है. So that's why the name photosynthesis. One important thing, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. इसका क्या मतलब है? सन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है. हमें चाहिए होता है विटामिन डी. हमें क्या बोलते हैं? थोड़ी देर हमेशा धूप में बैठना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है. प्लांट्स को सनलाइट चाहिए. अब हमारे पास जो फूड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो भी तो प्लांट से ही आ रहा है, राइट? तो हमें भी तो सन की एनर्जी चाहिए. देयरफॉर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आई होप यू आर क्लियर विद दिस प्रोसेस. अभी हमने क्या किया? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल क्या करता है? इट एब्जॉर्ब सनलाइट नीचे से. रूट्स क्या करती हैं? एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स. स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वी कैन से एब्जॉर्ब CO2, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड. तीनों चीजों ने अपना काम कर दिया. जो जो चीजें चाहिए थी फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब कर ली. अब क्या होगा? अब क्या होगा? सनलाइट ये हमने एब्जॉर्ब कर ली. अब लीव्स में क्या है? सनलाइट की एनर्जी आई. CO2 था, वाटर था, मिनरल्स थे. ये क्या करेंगे? इन द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, they will form glucose, right? Plus oxygen.
ये क्या है? ये हमारी है इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Clear? I hope now you are clear with this process of photosynthesis. You can see the image. Carbohydrate plus oxygen will give